the list of some softwares which I need. Very first software I need is SD card formatter. Second software which I need is the imaging software, okay, which will write image on SD card. Apart from this, I need one software which is called as Putty. So I need the next software which is called as Putty, okay, for remote communication. With Putty, I can control my Raspberry Pi, but in CUI format, character user interface. For better version, I can use BNC viewer. This is again for remote control only. Remote controlling, but in GUI format, graphical user interface. I'll be showing you both. The next which I need is advanced IP scanner. IP scanner. The next software. This is to find out the IP address of my RPI, to which address it is connected. Fine. And then what more I need is, yeah, FileZilla client. This is to upload file from my Windows machine to the Raspberry Pi. That is a sort of Linux machine which are connected to the same network. Fine. So these are the minimum softwares are needed. Now, why I need SD card formatter? Suppose already I have a card. Now I'll just show you why I need the SD card formatter. Practically, I'll show you. Just a moment. Fine. Now I'm connecting my SD card. On this SD card already, there is OS. How I'll come to know that is an OS on this? See here, you can see two things. One is boot and one is USB drive. Can you see these two things? Boot and USB drive. The moment I click USB drive, it says me format the disk. I click on boot. I get something in this. Let's see what is the size of this boot. Size of this boot is around approximately 250 MBs. And rest of the things are given to this USB drive. Now what is there in this USB drive? Already I have installed Raspbian in that. Now if I format, what will happen? I will only get this 250 MB which is formatted by Windows, not by this much. So for this I need SD card formatter. Okay, what I need is SD card formatter. Let's see, I have SD card formatter. नहीं तो हम install कर लेंगे. It is from SA Association. There is SD card formatter. So yes. Now see what it says. It is giving me total 29.16 GB. Okay. If I directly format this card, I'll only get 250 MB, which is taken care by Windows. So I'll say quick format. Okay. And done. Now see, the boot has gone from here. Khali USB bacha hai. Done. My SD card is formatted. Now it's a total raw card. Now here I'll go Raspberry Pi download. I'll go to download. Now click on this Raspberry Pi download. You will land up to the Raspberry Pi page. Now here you have many different things. Okay, you can see
the main interesting part for us is Raspberry Pi Imager. Okay? पहले क्या होता था, मुझे इमेज डाउनलोड करनी पड़ती थी और इमेज डाउनलोड करके कॉपी करना पड़ता था. अब ऐसा नहीं है, सिस्टम चेंज हो चुका है. फाइन. मुझे Raspberry Pi Imager एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड करना है. I'll show you here. There is a Raspberry Pi Imager. Okay, I'll just go back. Yeah, in this you can see there is a Imager 1.6.2. 1.6.2. This is Raspberry Pi Imager. Already I've downloaded और उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है, which is available here. Raspberry Pi Imager. Okay, here it is there. See, can you see this Raspberry Pi Imager at the left corner of my monitor? छोटा सा Raspberry है और उसके बाद आगे Raspberry Pi Imager लिखा हुआ है. Fine. I have to just click that particular software. The moment I click the software, what will happen? See, software load हो गया. I don't want any update now. This is Raspberry Pi Imager. What he says, first choose the OS. चलो OS select करेंगे. What you can do is you can select Raspberry Pi OS, click this, and from this you select the full version. अगर आप लाइट वर्जन लेते हो, लाइट वर्जन, तो उसमें कोई भी GUI नहीं होगा, डेस्कटॉप नहीं होगा. ठीक है, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पुट्टी के साथ ही चलेगा, VNC के साथ नहीं चलेगा. तो Raspberry Pi 0 है, उसमें मेमोरी कम है. कम मेमोरी है तो मुझे GUI की जरूरत नहीं है. सपोज GUI की जरूरत नहीं है तो मैं उसमें Raspberry Pi Lite लोड कर सकता हूं. बट जनरली आई सजेस्ट फॉर Raspberry Pi full 32-bit द कंप्लीट. इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे. तो आई हैव सेलेक्टेड दिस. इसके अलावा भी उसमें सॉफ्टवेयर है. यू कैन सी देयर आर मेनी थिंग्स. यहां तक कि इसमें हम विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज भी चला सकते हैं. फाइन. बट आई विल टेक द कंप्लीट वर्जन. यहाँ पर भी लिया हुआ है अ पोर्ट ऑफ Debian, द Raspberry Pi डेस्कटॉप recommended. So it's same thing here also. ये वाला मैंने ले लिया. Then I'll select my card. Now see here, बहुत ध्यान देना है आपको. यहाँ पे भाई गड़बड़ी मत करना, नहीं तो अपना हार्ड डिस्क उड़ा दोगे. यहाँ पर लिखा हुआ है WDC 2.4 GB. मुझे उसको यूज नहीं करना है. नीचे देखो MXT USB storage 31.3 GB. Select this. And once you select this, say write. Okay, अभी वार्निंग देते हैं आपको कि all existing data will be deleted. No issues. मेरे उसमें डेटा है ही नहीं. Start writing. Now this process will take around 35 to 40 minutes. ओके, ये जब तक राइट हो जा रहा है ना, अब क्या होता है मालूम है, जब आप Raspberry Pi को बूट करोगे ना, वो वाईफाई से खुद से कनेक्ट नहीं होता है जब तक हम उसको वाईफाई की डिटेल्स नहीं दे. तो मुझे क्या करना है, आई नीड 2 फाइल्स टू बी कॉपीड. तब तक ये कॉपी होता है ना, मैं आपको बताता हूँ वो 2 फाइल्स कौन सी है. कॉपी होते रहेगा. आपको 2 फाइल्स और कॉपी करनी है. जब ये हो जाएगा, कहां पे कॉपी करनी है मैं आपको बताता हूँ. देयर इज वन फाइल विच इज कॉल्ड एज SSH. SSH जो फाइल है, इस फाइल में कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक फाइल है. बट ये ब्लैंक फाइल जब मैं Raspberry Pi में लिख देता हूं, ओके, कार्ड में, तो वो आपको हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए. ये सिक्योर्ड शेल जनरेट करता है. फाइन. अगर आप इस फाइल को नोटपैड में ओपन भी करोगे, कौन सी फाइल है, SSH. अगर इस फाइल को नोटपैड में ओपन भी करते हो, यू वोंट गेट एनीथिंग इन दैट. ये फाइल ब्लैंक है, पूरी तरह से ब्लैंक फाइल है, कुछ भी नहीं है. जस्ट खाली मुझे फाइल बना के रखनी है. बट वेरी इंपॉर्टेंट इज wpa-supplicant.conf. इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट फाइल. ये फाइल को आपको यहां से जस्ट पहले फाइल के अंदर क्या है देख लेते हैं हम. एप्स. ओके, अब देखिए WP supplicant में क्या है. Very important is this 3 parameters, this 2 parameters rather. ये फाइल
देखो मेरा रास्पबेरी पाई जैसे ही बूट होगा ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो मुझे ये फाइल है ना WP सप्लीकेंट, इस फाइल में यहां पर मैं अपना SSID लिख दूंगा, जय गुरुदेव। दिस इज माय SSID एंड हियर आई राइट माय पासवर्ड JAI 1 2 3 4 5। खत्म। बस ये दो चीजें इसमें लिख देनी है। ओके, माय कंट्री इज इंडिया, ये कॉन्फ़िग फाइल है, फाइन। बाकी जो भी इंटरफेसेस है लेट इट बी एज इट इज। हमें सिर्फ चेंज करना है SSID और उसका पासवर्ड। ये दो चीज करके सेव करके आप रख दो इस फाइल में। मेरी दोनों फाइल रेडी हो गई, ठीक है। सी इंस्टॉलेशन हो गया है, तो वेरीफाई हो रहा है, फटाफट वेरीफाई हो जाएगा। एंड व्हाट वी विल डू, ये दोनों की दोनों फाइल्स मैं अभी का अभी इसमें कॉपी करना आपको बता दूंगा। द मोमेंट दिस बोथ फाइल्स आर कॉपीड, जैसे मैं रास्पबेरी पाई मेरा बूट करूंगा वो ऑटोमेटिकली वाईफाई को कनेक्ट हो जाएगा। एक SSH और दूसरा जो है WPA सप्लीकेंट। ओके, .config फाइल, .conf फाइल, इसको आगे .conf लिखना था, रह गया। वेरिफिकेशन चालू है, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स ये वेरिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा। इट इज वेरीफाइंग वेदर द कार्ड इज प्रॉपरली रिटन और नॉट। चलो, my SD card. Now see what has happened at last. Raspberry Pi OS is full. 32-bit has been written on USB storage. Continue. Fine. Now I'll close this. Now you can see here. वो changes दिख रहा है आपको यहाँ पे? Yes, you can see USB drive. but वो भी दिखा रहा है आपको फॉर्मेट करने का। Fine. Now what I'll do, I'll just remove and again connect this card. Just a moment. Can you see these two devices? One is USB and other is removable something. Yes sir. ये देखो USB में सारा डेटा मुझे दिख रहा है। Fine, I can see everything, which is just of 252 MB. Rest of the space is allocated to the another part. Now what I'll do, as I've told you, these two files, SSH and WPA applicants, supplicants. I'll take these files and I'll copy these files here. Now you can see these two files here, correct? Can you see this? WPA yes, supplicant and SSH. Let me refresh the screen again. Okay, these are the two files I have copied. So my Raspberry Pi is now ready to work. Okay, now it is ready to work. Okay, now just the one who has asked me the question. See, if I am not connecting keyboard and mouse to my Raspberry Pi, see, you can't expect that at any place you will have one spare keyboard, one spare mouse and one spare monitor, correct? Yes sir. Or no? In that case, if I connect directly this to Wi-Fi, okay, directly this to Wi-Fi, and I can do remote booting from my computer using either Putty or VNC viewer. If I'm using Putty or VNC viewer, my job is done. I need not have to have a separate memory card, separate keyboard and mouse for it. So I hope you got the answer why I need it to be connected to the internet.